Yeah. Now the session is going to be recorded on behalf of JS English Literary Society. I, Dr. Muhammad Shami, welcome to all of you in my class, and that is what that is a ST Coleridge as a critic. If I talk about ST Coleridge as a critic, already I have delivered a lecture on ST Coleridge. Especially, I have taken his biographical study, his works at a glance. And yesterday, I told you whenever you talk about ST Coleridge as a critic, there are some words associated with that man that you have to keep in your mind, especially willing suspension of disbelief, concept of imagination, that is primary imagination, secondary imagination, and concept of fancy, and concept of poetic diction, supernatural concept of poetry. I also told you ki what College thinks about uh, the theory. Yeah, you can say the definition of poetry given by William Wordsworth, या वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ पोइटिक डिक्शन. तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर इंसान को जब भी कॉलेज उसके दिमाग में आए या कॉलेज का नाम वो सुने तो कुछ चीजें उसके दिमाग में आना चाहिए. कौन कौन सी चीजें हैं? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, नंबर वन. Number two, concept of poetic diction given by William Wordsworth. What Coleridge thinks. What Coleridge thinks. Number third, concept of imagination, that is primary and secondary imagination. Number fourth, concept of fancy. Number fifth, supernatural concept of poetry. Taking these points, today I will discuss with you in a detailed way. I have a beautiful article written by someone. I will share with you who has written it. I found this article on a blog, and these types of blog writing is going to be popular day by day, and we can get some points, we can get some good articles, or you can say related to any criticism or any topic of literature, if we search blog of someone. So just sharing with you the first point. मैं थोड़ा सा, वो ब्लॉग बड़ा है, मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा. जहां मैं कहूंगा कि डू यू हैव टू गो दिस पॉइंट, इफ आई मार्क एनी लाइन, इफ आई मार्क एनी वर्ड, यू हैव टू नोट डाउन, यू हैव टू नोट डाउन, एंड आई विल शेयर यू ऑल दीज ब्लॉग्स इन योर ग्रुप, ताकि आप अपना नोट से प्रिपेयर कर सकें. या शेयरिंग विद यू द इमेज. आई थिंक इट्स विजिबल. If it's visible, let me know. Is it visible? Yes, sir, it is visible. Yeah, okay. You find here, you find कि this blog was written, this article was written on his blog by Abdul Abedi. Abdul Abedi, or Abdul Abedi posted this blog on 2nd November 2017. That was Thursday. College as a critic, and he is saying ki to evaluate my assignment, click here. I just only shared with you, it's not my content. The credit is given to Abdul Abedi. It's a beautiful article on college as a critic. This is why I shared with you, and I will also send it in WhatsApp group, and I hope that you will get it. You have to enjoy, you have to go there. And just to prepare the notes, I will also send the link of this blog, and you can just leave the comment ki how do you find, and it will just encourage Abdul Abedi ji, and he will be able to write some more articles on other critics. So now just sharing another image, closing this one and sharing another image. Now sharing another image, that is you find here. Yeah, you find this one. You find Coleridge as a critic, and here you find introduction. Some lines I will leave, but you have to go. If I just read anything, if you find anything, you have to only go, okay, what are the important points. Here you find some lines in the appreciation of S.T. Coleridge. You find Samuel Taylor Coleridge, born 1772. Already I told you, died in 1834. Was a great poet. वो एक poet थे, एक common point है, but he is also a great critic. और वो एक great critic भी थे. He is one of the greatest of poet critics. एक नया शब्द हो सकता आपके लिए हो,
या आप कह सकते हैं कि पहले से भी आपने सुना है, लेकिन मैं इस शब्द को सर्किल में करना चाहूंगा. यू ऑल हैव टू नो हु इज अ पोएट क्रिटिक्स. One who is a poet as well as critic, one who is paying two duties simultaneously. एक आदमी जो दो ड्यूटी अदा कर रहा है कि ही इज अ पोएट एज वेल एज क्रिटिक, उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? पोएट क्रिटिक. That England has ever produced. He was a genius, and when he inspired and when he moved work upon him, he could create works of the highest order. उनका जो वर्क था वो किस तरह से था? वो हाईएस्ट ऑर्डर का था. ये केवल एक एडमिरेशन है, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है. नोट क्या करना है कि he was born in 1772, died in 1834. Already you have noted it, but just I recalling your memory. And he was a poet as well as critic. This is why he is known as, he is addressed as poet critic, and he could create works of highest order, but he was incapable of sustained and persistent labor. There is a critic स्ट्रेस. स्ट्रेस नाम के क्रिटिक है. वो क्या रिमार्क करते हैं? स्ट्रेस रिमार्क्स ऑन लिटरेचर एंड लिटरेरी थियरी आर scattered all over his prose works as the friend, table talks, later aids to reflection, confessions of an inquiring spirit, animal poetry, Sibylline leaves, but the bulk of his literary criticism, all that is most worthwhile in it is contained in his Biographia Literaria, Lectures on Shakespeare and other poets. यही दो वर्क है जो उनको एज अ क्रिटिक इस्टेब्लिश करता है. बायोग्राफिया लिटरेरिया, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एंड अदर पोएट्स. इसके पहले भी उनका कुछ था, जैसे द फ्रेंड टेबल टॉक्स, लेटर्स, एड्स टू रिफ्लेक्शंस, confession. These things you can, confessions of an inquiring spirit, animal poetry, Sibylle leaves. लेकिन अगर आप देखेंगे ये तो उनके आर्टिकल थे अपनी जगह, ठीक है, दिस वर द आर्टिकल्स ऑफ दैट मैन, बट यू फाइंड दैट कि his popularity as a critic rests on Biographia Literaria and lectures on Shakespeare and other poets. So these points you have to remember: Biographia Literaria and lectures on Shakespeare and other poets. Activity, always remember कि Biographia Literaria it came in 1817, and yesterday I told you Biographia Literaria was such a type of work in which he tells about imagination, in which he tells about fancy, and you will come to know in Biographia Literaria he also tells about his own life, अपनी life के बारे में. It is also taken as a biographical work. Activity of the poet's mind. You find what? You find the activity of the poet's mind, and a poem is merely one of the forms of of expression. A verbal expression of that activity, and poetic activity is basically an activity of the imagination. ये लाइन बिल्कुल रट लीजिएगा. Poetic activity is basically an activity of the imagination. If anyone asks you what is the definition of poetry, you must learn this line and always quote कि poetry is basically an activity of the imagination. Whenever you use the word imagination, it means that you have read Coleridge very well. So you find कि जो पोएट्स के माइंड की एक्टिविटी ऑफ द पोएट्स माइंड, जो पोएट्स के माइंड की जो एक्टिविटी होती है वह किस शक्ल में आती है? पोयम की शक्ल में आती है. बिकॉज अ पोएट ऑलवेज कंपोजेस पोयम. और कल ही उन्होंने बताया था कि जो पोएट है, पोएट इज लाइक अ, इवन वर्ड्सवर्थ ने भी कहा था कि पोएट इज लाइक अ मैन एज वी आर, बट what is that is only the difference is only the difference of the status or degree of imagination. So imagination जो है वो चीजें, सबलिमिटी, उन सब चीजों को लेकर के वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. So activity of the poet's mind and a poem is merely one of the forms of expression. Poem is what? It's merely one of the forms of expression. A verbal expression, जिसमें हम क्या करते हैं? verbal expression करते हैं of that activity. Whether you talk about poetry, whether you talk about poem, whether you talk about prose, these are the genres of literature. ये जो है literature के genres हैं, and you come to know कि these genres are only what? They are the only forms of expression. And what expression? Verbal expression of the activity.
And poetic activity is basically an activity of the imagination. It means that when you talk about poetic activity, in poetic activity you find the use of imagination. He has given the he has given the reference of a well-known critic, David Duchess. As David Duchess points out, poetry for Coleridge is a wider category than that of a poem. Remember that. It has been said by whom? It has been said by David Duchess. And what David Duchess says, David Duchess points out poetry for Coleridge is a wider category than that of a poem. That is, poetry is a kind of activity which can be engaged in by painters or philosophers or scientists and is not confined to those who employ metrical language. बहुत बड़ी बात कही है। और आप ये समझिए कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पोइट्री का दायरा बढ़ा दिया। और डेविड डचेस कहते हैं कि कॉलरिज की नजर में जो पोइट्री है यह एक वाइडर कैटेगरी है देन दैट ऑफ अ पोयम। पोयम जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि पोयम एक तरह से वी कैन यूज द वर्ड कि अनडाउटली पोयम में क्या होता है, मेट्रिकल कॉम्पोजिशन होता है। पोयम की डिफिनीशन यही है कि इन पोयम वी फाइंड द मेट्रिकल कॉम्पोजिशन। लेकिन उन्होंने कहा कि पोइट्री इज वाइडर कैटेगरी देन दैट ऑफ पोयम। दैट इज पोइट्री इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी विच कैन बी इंगेज्ड इन। पोइट्री एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पेंटर्स को भी इंगेज किया जाता है, फिलोसफर्स को भी इंगेज किया जाता है, साइंटिस्ट को भी इंगेज किया जाता है एंड इज नॉट कन्फाइंड टू दोज हु इम्प्लॉय मेट्रिकल लैंग्वेज। और ऐसा नहीं है कि केवल वो मेट्रिकल लैंग्वेज तक ही सीमित है। इवन अ पेंटर आल्सो writes poetry or composes poetry. Philosopher also writes poetry. Scientists also writes poetry. It's the opinion of who? It's the opinion of Coleridge. So Coleridge ने क्या किया, पोइट्री के दायरे को बढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि पोयम जो है वह मेट्रिकल कॉम्पोजिशन हो सकती है, उसमें मेट्रिकल लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पोइट्री इज ओनली द प्रोडक्ट ऑफ पोएट। In composing poetry, painters also play their role, philosophers also play their role, scientists also play their role. It can't be confined that poetry is only the product of poet. It's a new concept. It's a new concept. Or even to those who employ language of any kind. Poetry in this larger sense brings the whole soul of man. ये word बिल्कुल रट लीजिएगा। आदमी की पूरी आत्मा, जब पूरी आत्मा से वो लिखता है, पूरा उसका शरीर, उसका दिल, उसका दिमाग जब संगठित होता, ऑर्गेनिक फॉर्म में होता, तब पोइट्री आती है। सो यू फाइंड पोइट्री इन दिस लार्जर सेंस ब्रिंग्स द होल सोल ऑफ मैन इनटू एक्टिविटी। व्हेन द सोल ऑफ अ मैन परफॉर्म्स देन पोइट्री कम्स। ऐसा नहीं कि केवल माइंड काम कर रहा, हार्ट काम कर रहा, नो। उसमें उन्होंने कहा कि द होल सोल ऑफ माइंड इनटू एक्टिविटी विद ईच फैकल्टी प्लेइंग इट्स प्रॉपर पार्ट। और हर फैकल्टी अपना रोल प्ले करती। कौन कौन सी फैकल्टी? माइंड हुआ, हार्ट हुआ, उसका अपना थॉट हुआ, उसका अपना इमोशन हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? सोल का होता है। तो ये पूरा पैसेज जो यहाँ पे डेविड डचेस का चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जानने के लिए कि उन्होंने क्या कहा पोइट्री को लेकर के। मेट्रिकल लैंग्वेज इज नॉट ओनली पोइट्री। इफ एनीवन यूज मेट्रिकल लैंग्वेज, इफ एनीवन से दैट आई एम अ पोएट एंड आई प्रोड्यूसेस पोइट्री, तो यू कांट कन्फाइन पोइट्री या यू कांट ओनली रिलेट पोइट्री टू पोएट. But anyone can compose poem. Even painters compose poetry, not poem, poetry. Painters compose poetry, philosophers compose poetry, scientists compose poetry, and he says what? That is a very important point. Ki the whole soul of man, the whole soul of man. It's a very significant point. It contributes what it contributes in writing poetry, in producing poetry. Poetry को write करने. This takes place whenever the secondary imagination. This is the secondary imagination. और ये तभी आता है जब secondary imagination. Now he is talking about imagination, primary and secondary. This is the concept of whom? This is the concept of S.T. Coleridge. So primary imagination is associated with common man. Secondary imagination is associated with what? With poet. And you find it where what? You find it a very significant point
कि एक नया कॉन्सेप्ट मिला कि पोइट्री इज नॉट ओनली द प्रोडक्ट ऑफ अ पोएट बट इवन अ साइंटिस्ट, इवन अ पेंटर, even a philosopher can also produce poetry, write poetry. But to compose poetry or to write poetry, what is important? The important thing is larger sense brings the whole soul of man. Poetry in this larger sense brings the whole soul of man into activity, and each faculty of that creator plays significant role in creating poem or poetry. Now, if you have any point, yeah, if you are unable to understand anything, then I have to discuss with you. Otherwise, I have to share. Let me allow to share another image. Yeah. Have you any problem? No, sir. No Okay. problem. Okay. Yeah. Let me share you another significant point. Another image in which you will find what? In which you will find the concept of Coleridge का पोएट्री को लेके क्या कॉन्सेप्ट है शेयर या शेयरिंग विद यू अनदर इमेज दैट इज द here you find this one, this one you find. And here you find कि he just says कि imagination जो कि बहुत important role play करता है, this is imagination that play a very important role. And here he talks about the secondary imagination because some lines are missing and that's not visible there, but you will be able to now he is talking about imagination. Already I told you कि college has a concept in Biographia Literaria chapter number 13. Biographia Literaria came in 1817, and in that chapter number 13 he says that imagination means it dissolves, diffuses, and dissipates. Number one point. He also says that कि imagination का मतलब उन्होंने कहा कि this is imagination that ultimately you can say it dissolves, diffuses, and dissipates, and this is imagination that has two types: primary and secondary imagination. Primary imagination is associated with common man, while secondary imagination is related to poet. एंड पोएट्स का ये सुप्रीम फैकल्टी होता है, पोएट्स का जो सुप्रीम फैकल्टी होता है ऑलरेडी ही सेज कि the whole soul of man, and then he says that each faculty plays significant role in creating. That is the point. So secondary imagination is at work bringing all aspects of a subject into a completion, unity. Then poetry is this, then poetry in this larger sense result. Poetry ऐसा नहीं है कि बस हम सोचे और आ गई. उनका ये कहना था कि पोइट्री को कंपोज करने के लिए आपको अपनी आत्मा को सबसे ज्यादा लगाना पड़ेगा, और आत्मा जब आदमी लगाता है तब उसका मिलन परमात्मा से होता है. द पीपल से it is believed that because atma is the part of paramatma, that is the integral part. So Coleridge says that if you want to compose a poem, anyone can compose poem, anyone can compose poetry if he uses his whole soul, and other faculty of that person also plays significant role. उसका हार्ट, उसका माइंड, उसका थॉट, उसका इमोशन, अदर सेंसेस दे आल्सो, एंड दिस इज व्हाट उसी चीज को उन्होंने नाम दिया सेकेंडरी इमेजिनेशन. Coleridge is one of the greatest of literary critics, and his greatness has been almost universally recognized. He occupies without doubt the first place among English literary critics. After eliminating one after another the possible contenders for the title of the greatest critic, Sainsbury concludes. So you find that कि whenever you find this Coleridge, तो कॉलेज को लेकर के सेंसबरी ने दो कॉन्सेप्ट दिया है. वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? उनकी थीम्स ऑफ पोइट्री और रस्टिक लैंग्वेज की अब बात होती है. अभी तक एक पोर्शन खत्म हुआ. कॉलेज की नजर में पोइट्री क्या है? पोइट्री क्या केवल पोएट अकेले कंपोज कर सकता है या और भी कोई कर सकता है? कॉलेज सेज दैट कि पोइट्री इज नॉट ओनली प्रोड्यूस्ड बाय पोएट. इफ एनीवन कैन फाइंड पोइट्री, दैट पोइट्री कैन ओनली बी कंपोज्ड, रिटन, क्रिएटेड by poet, it means he doesn't know how poetry is written, how poetry is composed, how poetry is produced. And he says that scientists, philosophers, and
other words he uses, just I'm missing. उन्होंने कहा कि they also compose, they also produce poetry, they also create poetry, they also produce poetry. वे लोग भी पोइट्री को जन्म देते हैं। जब उनसे बात कही गई तो उस लेवल पर वो आते हैं और क्या उन्होंने कहा, एट द सेकेंड, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके प्रोड्यूसिंग में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, वी फाइंड द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ secondary imagination, we find the use of soul, we find the use of other faculty, we find the use of other faculty of that man who produces poetry, who compose poetry, who creates poetry, we find the use of these person. So एक सेक्शन अभी कंप्लीट हुआ, दूसरा सेक्शन क्या है, कॉलेज का जो क्रिटिसिज्म है उसमें थीम क्या होना चाहिए पोइट्री का, और रस्टिक लैंग्वेज क्या है। जब यद्यपि रस्टिक लैंग्वेज जो है ये कॉन्सेप्ट है पोएटिक डिक्शन का गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। एट द सेकंड चार्ज ऑन द स्टेटमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज ऑब्जेक्ट the best part of the language is derived from object which the rustic constantly communicates. This is a very significant point जब वो कहते हैं कि at the second charge on the statement of Wordsworth, वर्ड्सवर्थ ने जो स्टेटमेंट दिया था, कौन सा स्टेटमेंट दिया था, रस्टिक लैंग्वेज का, कॉलरिज उस पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और उन्होंने क्या कहा था, दैट बेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, जो बेस्ट पार्ट है लैंग्वेज का, दैट बेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट विच द रस्टिक कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट। ये बात किसने कही थी, वर्ड्सवर्थ ने कही थी। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था, बेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज इज डिराइव्ड, सबसे अच्छी भाषा वह होती है विच द रस्टिक, जिसको कि रस्टिक, रस्टिक का मतलब कि द पुअर पीपल, रस्टिक का मतलब सिंपल पीपल, रस्टिक का मतलब पीपल हु आर लिविंग इन विलेज एरिया, इफ दे यूज दीज वर्ड्स, तो वो उन्होंने ये कहा था कि ये चीज होती है। लेकिन कॉलेज क्या कहते हैं, कॉलेज इसके अगेंस्ट में, कैसे अगेंस्ट में, वो कहते हैं first communication with an object indicates reflection on it. First communication with an object, अगर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के कम्युनिकेट किसी चीज को करते हैं तो वो चीज क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। फर्स्ट communication with an object indicates reflection on it and richness of vocab arises from such a reflection. Collins says that vocab of rustic is poor because they can express only barest fact of nature, because they can express only barest fact of nature, can't express such idea, thoughts or universal law which from reflection on the facts. Secondly, Coleridge charged that the best part of the man's language does not simply communicates with nature, but from the education, from the noble ideas, thoughts, words एंड ग्रेट माइंड। ये एक उनका बहुत स्ट्रांग पॉइंट है जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, इधर यू और आई और एनी वेल नोन क्रिटिक। ये बहुत बड़ा चार्ज उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगाया। जैसे वर्ड्सवर्थ का ये कहना था, बहुत सिंपल सी बात है, वर्ड्सवर्थ का ये कहना था कि जो रस्टिक पीपल है और जो उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है वही ही सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज है, बेस्ट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज है। कॉलरिज ऑब्जेक्ट, और कॉलेज को इस पर ऑब्जेक्शन था। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि द लैंग्वेज स्पोकन बाय रस्टिक, or you can say the people who are simple or poor villagers, that language is the best language and that language you should be used to compose the poem. अब उसके बाद होता क्या है, कॉलेज ये कहते हैं कि जो जब हम किसी चीज को कम्युनिकेट करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को देख करके कम्युनिकेट करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को देख के कम्युनिकेट करते हैं तो वह जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वह उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है। मेरी बात आप समझिए, अगर अभी जैसे मैंने आपको फोटो दिखाई, आपको ये ना पता हो कि ये फोटो किसकी है, आपको ना पता हो, आपके पास मैंने एक ऑब्जेक्ट दिखाया, वह ऑब्जेक्ट किसका है, आप ये कहेंगे ये एक मैन है, कोई इंफॉर्मेशन आपको ना पता हो, तो आप सबसे पहले वहां पे आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा, उस ऑब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्शन आपके माइंड में आया कि ही इज अ मैन। फिर आपको लगा ये मैन क्या किया हुआ है कि टाई बांधा हुआ है और एक मैन जो है वेल यूनिफॉर्म में है, ऐसा लगता है कि इसका जो सूट बूट है वह वेस्टर्न कल्चर का है।
तो अब आप क्या करें, उस मैन की केवल पिक्चर को देख करके, कुछ नहीं लिखा, यू ओनली फाइंड अ पिक्चर ऑफ दैट मैन, मींस दैट वाज कॉलरिज, एंड यू कम टू नो कि उसके लॉन्ग हेयर है, उसका वो है, देन यू कम टू नो कि वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कॉलरिज ने कुछ नहीं बोला, कॉलेज की पिक्चर आपको कुछ बोल रही, एंड यू आर रिफ्लेक्टिंग, आप जो भी उसके बारे में करें यू आर रिफ्लेक्टिंग। तो जो कोई ऑब्जेक्ट होता है, जब आप उस ऑब्जेक्ट को लेके कोई बात करते हैं, तो यू रिफ्लेक्ट समथिंग, यू से समथिंग, आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, आप उसको कुछ कहते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि ये जो बेस्ट रिफ्लेक्शन है, जो बेस्ट लैंग्वेज है, वो केवल और केवल रस्टिक के द्वारा नहीं यूज की जाती, बल्कि सबसे बेहतरीन लैंग्वेज, कॉलेज कहते हैं कि सेकेंडली, कॉलेज चार्ज दैट द बेस्ट पार्ट ऑफ द मैन्स लैंग्वेज डज नॉट सिंपली कम्युनिकेट विद नेचर बट फ्रॉम द एजुकेशन। जो सबसे बेहतरीन लैंग्वेज आदमी में आती है, वो एजुकेशन से आती है, नोबल आइडियाज से आती है, थॉट से आती है, वर्ड से आती है, एंड ग्रेट माइंड से आती है। ये चीज बहुत है, क्योंकि देखिए, जिसका भी जितनी भी लैंग्वेज, अगर रस्टिक पीपल के द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज बहुत ज्यादा वेलकम के लायक होती, या वो फिलॉसफी को या और चीजों को रिफ्लेक्ट कर पाती, तो जो कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में जो लैंग्वेज सिखाई जाती है, जो ये कहा जाता है कि दिस इज अ डिक्शनरी, इनरिच योर वोकैब, या लैंग्वेज विच वी लर्न, या वर्ड्स विच वी लर्न, वर्ड्स विच वी यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो वो सारे इंस्टीट्यूशन बंद हो जाते और लोग कहाँ पे चले जाते, केवल गांव में चले जाते, नदी किनारे बैठ जाते, वहीं से वोकैब कर लेते, वहीं से सुन लेते। तो कॉलरिज का ये कहना है कि वर्ड्सवर्थ, ठीक है, उनकी सिंप्लिसिटी थी, उनकी सिंपैथी थी पुअर विल्जर्स के प्रति, लेकिन अगर वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि जो बेस्ट लैंग्वेज है ये केवल पुअर विल्जर्स के द्वारा बोली जाने वाली है, तो हियर आई हैव ऑब्जेक्शन, द बेस्ट लैंग्वेज कम्स ओनली if the man is educated, if the man has noble ideas, if the man has thoughts, if the man has words and great mind. Then here college object that man communicates with nature through his ideas with the mastermind of humanity. I think now you became able कि कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है रस्टिक लैंग्वेज को, वो क्या ऑब्जेक्शन करते हैं। अभी तक हो सकता है इतना क्लियर ना रहा हो जितना आज वो चीजें क्लियर हो गई। और एक चीज ये भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, Coleridge says that vocab of rustic is poor because they can express only barest fact of nature. This is the point. Coleridge का ये कहना है, Coleridge says that vocab of rustic is poor. Coleridge का ये कहना है कि जो vocab है rustic की, ये poor होती है because they can express only barest fact of nature. Such idea thoughts are universal language from reflection on the fact. Now, if you have any point or anything which you are unable to understand, let me know. किसी को, इधर रामा या आर सारिका मैम और अमित जी। सर यहाँ पे सर ये सेंटेंस है, कॉलेज says that vocabulary of rustic is poor because they can express only barest fact of nature, can't हाँ, express the idea thoughts. So what is barest fact of nature? barest fact, the you can say कि the basic जो fact है nature का, they can express only the object of nature, they can only express, but they can't express the idea. For example के लिए, अगर आप जो है किसी आदिवासी से जो जंगल में रहता होगा, उससे ज्यादा तो नेचर के करीब कोई होता नहीं होगा। तो if Yes. you go to that Adivasi will only tell you what this only tell you in his or her own language that this is the food, this is the thing, वो उसको बताएगा। लेकिन ये कहिए कि वो उसकी ओडोर को, वो उसके फ्रेग्रेंस को, वो उसकी ब्यूटी को एक इमोशनल टच दे सके, उसके पास इतना वोकैब नहीं होगा, आइडिया उसके पास उतना नहीं। Yes sir. दैट इज द पॉइंट। वो ऑब्जेक्ट बता देगा, ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की गहराई जो है कहां से हमें पता चलता है, when that object comes in a laboratory, when that object comes you can say
when we experiment it, when we come to know it, yeah, this is the this is the this, और इसका इस तरह से, then we come to know. फॉर एग्जाम्पल के लिए एक समय रोज केवल फ्लावर रहा होगा, अगर आप किसी जो है आदिवासी से या जो भी होगा उसके लिए रोज क्या हो सकता है, एक फ्लावर हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में रोज क्या हुआ, रोज सिंबल ऑफ पैट्रियटिज्म बना, रोज सिंबल ऑफ नेशनलिज्म बना, रोज नेशनल फ्लावर बना, रोज सिंबल ऑफ लव बना, रोजी चीक का कॉन्सेप्ट आया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो ये सब चीजें आपको कहां से मिलता है? मेटाफोरिकल लैंग्वेज, इफ यू टॉक अबाउट फिगरेटिव लैंग्वेज, इफ यू टॉक अबाउट समथिंग सिंबल, इफ यू टॉक अबाउट इमेज, क्या सिंबल इमेज का ये कॉन्सेप्ट जो है दे कैन गिव यू? नो. अगर हम लोगों का भी एजुकेशन उस लेवल का ना होता, इफ यू डोंट नो अबाउट कॉलेज, इफ यू डोंट नो अबाउट व्हाट्सएप, वी वर अनेबल टू अंडरस्टैंड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Okay, sir. So I think you got it. Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. Yeah. Let me give give you only one. Just wait.